Hi guys. Today will be the second video of this channel. So I had a lot of comments earlier कि I should start a legal current affairs series or a legal GK series. So that's why I brought up this video. So basically what we'll be doing here is that this is a two-part series. That why this is part one. This is the first part of the legal current affairs of November month 2021 for your CLAT examination. So without further ado, let's get started straight to the video. Okay, so as an introduction of myself, I am Anurag Mohan Bhatnagar. I am a fourth year law student at NLU Odisha. And this channel would be your one stop destination for all the updates regarding the current affairs and the static general knowledge, and later on the legal aptitude section of the CLAT examination. So, let's get started. Our first topic of the class would be the National Cyber Security Strategy. Okay, basically, India is the most vulnerable country in terms of the cyber attacks. There are almost 4 million malwares happening on a daily basis in our country. So, what's the reason behind India being the most vulnerable country in terms of cyber security? Is this? So we have almost 700 million internet users, which basically make us a very large impact surface, a threat. Okay. Although in the global security index, India has been ranked 10th this year. Okay, ये 2021 की बात है. In the last year, India was ranked 47. So it is a big jump. ये jump basically इसलिए आया क्योंकि इंडिया ने as such इस साल कोई मेजर साइबर सिक्योरिटी थ्रेट्स फेस नहीं किए हैं, कोई कोई मतलब ज़्यादा थ्रेट फेस नहीं करें. ठीक है. तो साइबर सिक्योरिटी स्ट्रैटेजी की अगर बात करें तो नेशनल साइबर सिक्योरिटी स्ट्रैटेजी इज बीइंग मेड सिंस द लास्ट 2 years, and it is now finally in the cabinet for its approval. And who will be the coordinator of this particular strategy? So it's going to be Lieutenant General Rajesh Pant. He's a retired Lieutenant General. Okay. Next is about the Cyber Shiksha program. So Cyber Shiksha program is basically for the women in India. So what Microsoft plus Data Security Council of India would be doing is that basically they'll be creating a pool of skilled women in terms of cyber security strategy. So they'll be telling them how to counter this particular threat in India. So Microsoft has combined with has basically collaborated with Data Security Council of India to create a pool of skilled women individuals, and this particular program is called the Cyber Shiksha program. Okay, this is important. ओके. सो नेशनल साइबर सिक्योरिटी स्ट्रैटेजी जब इम्प्लीमेंट हो जाएगी तो क्या होगा कि टेबल द टॉप साइबर क्राइसिस मैनेजमेंट एक्सरसाइजेज शैल बी कंडक्टेड, एंड बेसिकली विल बी स्किलिंग अ लॉट ऑफ इंडिविजुअल्स टू वर्क इन द साइबर सिक्योरिटी सेक्टर. सो इससे जॉब्स और वैकेंसीज भी आएंगी बहुत सारी, तो बेसिकली एम्प्लॉयमेंट भी इंक्रीज होगा. ठीक है. सो दिस वॉज ऑल अबाउट द नेशनल साइबर सिक्योरिटी स्ट्रैटेजी. लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट टॉपिक. So our next topic of the class is about the Prime Minister Economic Advisory Council. Okay. The government of India has basically reconstituted a seven-member Economic Advisory Council to the Prime Minister. It has been reconstituted for a period of 2 years. ठीक है. इस इकोनॉमिक एडवाइजरी काउंसिल में कितने मेंबर्स होने वाले हैं? 7. और ये 2 साल के लिए रिकॉन्स्टिट्यूट हुई है. ठीक है, तो इसको ज़रा स्टार मार्क कर लेना, ये इंपॉर्टेंट है. और जो सेकंड पॉइंट है, ये बेसिकली मैंने आपकी इन्फॉर्मेशन के लिए लिखा है कि इसमें कौन कौन मेंबर्स हैं. तो ये 3 मेंबर्स इंपॉर्टेंट है: राकेश मोहन, पूनम गुप्ता एंड टीटी राम मोहन. ओके. पर इसमें से जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट है वो ये है कि इस काउंसिल का चेयरमैन कौन होने वाला है. तो द चेयरमैन ऑफ द काउंसिल विल बी विवेक डेब्रॉय. ठीक है. दिस इज ऑल्सो इम्पॉर्टेंट. नाउ व्हाट शैल बी द वर्क of basically this cyber secure economic advisory council would be that it is going to analyze any issue, be it economic or otherwise, which are referred to it by the prime minister. So if a prime minister faces difficulty in analyzing any issue which is of economic nature or any other nature, so he or she can basically go to the economic advisory council and ask for their analysis or their opinion. ठीक है. It was first constituted in September 2017, and what it did was it basically replaced the erstwhile Prime Minister Economic Advisory Council. So 2017 में पहली बार हुई और अब 2021 में दूसरी बार हो रही है. ठीक है. So our next topic of the class would be about the data bill and the UIDAI.
ठीक है, तो व्हाट इज यूआईडीएआई? यूआईडीएआई इज बेसिकली द यूनिक आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया, and what it has done is that it has appealed from being exempted from the PDP law to avoid the duplicity of laws. तो duplicity of laws क्या होता है कि if you govern one particular authority or one particular body under two laws, then that particular body has to face a duplicity of laws, क्योंकि एक particular body को इस particular act के according भी खुद को manage करना पड़ेगा और दूसरे particular act के according भी खुद को manage करना पड़ेगा. So there will be a lot of difficulty for that particular authority. So in that case, this particular authority is the UIDAI, and the two acts which are basically governing this particular authority is the PDP law and the Aadhaar Act of 2016. PDP law is the Personal Data Protection Bill, and it basically came in the year 2019. ठीक है? Aadhaar Act came in 2016 and the PDP law came in 2019. ठीक है? This is important. Okay, so what the PDP law was doing, basically it was making Aadhaar compulsory for several services including the banks. And the problem here is that the PDP law was the first basically legislation to initiate the data privacy debate कि आप बैंक अकाउंट को पैन कार्ड से लिंक करिए and there will be a lot of biometrics involved. So basically PDP law first initiated the data privacy debate, and now the PDP law is making Aadhaar compulsory for several services including banks. So there's this particular conundrum involved. So this particular point is about the UIDAI and the Aadhaar Act. So UIDAI is the authority which was established under the Aadhaar Act in 2016, and the Ministry of Electronics and Information Technology helped to establish this particular authority. And the main works among all was to issue a unique identification number. UID क्या होता है? यूनिक आइडेंटिफिकेशन नंबर. ठीक है, आपका आधार कार्ड होगा तो आधार कार्ड पे एक आधार नंबर होता है, दैट इज ऑफ 12 डिजिट्स. ठीक है, ये याद रख लेना कि आधार नंबर कितने डिजिट्स का होता है, तो 12 डिजिट्स का होता है, और उसी आधार नंबर को यूनिक आइडेंटिफिकेशन नंबर बोलते हैं. ठीक है, तो दिस वाज ऑल अबाउट द डेटा बिल एंड द यूआईडीएआई. अब नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं. So our second last topic of the class would be about the draft mediation bill. ठीक है, so what the Indian government has done here is that the Indian government has issued a draft mediation bill for the public consultation. ठीक है, it has basically issued the draft mediation bill in the public domain, and it is now asking for the opinion of the public. So मैं पहले बता देता हूँ कि basically mediation होता क्या है. तो if there are two disputing parties, ठीक है, A और B, और इन दोनों के बीच में डिस्प्यूट चल रहा है एक, सो इनको उस डिस्प्यूट को रिजॉल्व करने के लिए कोर्ट ना जाना पड़े, देयर इज दिस प्रोसेस कॉल्ड मीडिएशन, in which there's an impartial third party, in this case C, who basically uses his technique to resolve the issue between these two disputing parties. एंड इस पर्टिकुलर मीडिएशन का जो सेटलमेंट होता है, जो भी रिजल्ट आता है, दैट इज़ बेसिकली इन्फोर्सिएबल इन लॉ. ठीक है, तो ऐसा नहीं है कि आप कोर्ट नहीं गए और आपने मीडिएशन करवा लिया तो उसका रिजल्ट जो क्या है आप कोर्ट में इन्फोर्स नहीं करा सकते, वो बिल्कुल इन्फोर्स हो सकता है. एंड दैट पर्टिकुलर रिजल्ट इज़ नोन एज द सेटलमेंट. ठीक है, मीडिएशन सेटलमेंट. ठीक है, सो इस ड्राफ्ट मीडिएशन बिल में क्या होगा, दिस इज मेंशन्ड इन द सेकेंड पॉइंट. So it basically provides the pre-litigation mediation, and it basically safeguards the interest of the litigants to approach a competent adjudicatory forum. Competent adjudicatory forum क्या होता है कि कुछ courts बनाए जाते हैं जो कि specifically mediation से deal करते हैं. तो उसमें आप जाएंगे और आप अगर disputing parties हैं तो आपका जो dispute है उसको resolve करने की पूरी कोशिश करते हैं वो, और इससे urgent relief मिलता है. So बेसिकली इस पर्टिकुलर ड्राफ्ट मीडिएशन बिल को लाने का पॉइंट क्या है कि बहुत सारे लोग एनकरेज होंगे कि आपको कोर्ट ना जाना पड़े, प्रॉपर प्रोसेस फॉलो ना करना पड़े. आप अगर पहले ही आउटसाइड द कोर्ट सेटलमेंट कर लेते हैं मीडिएशन के थ्रू, सो इससे क्या होगा कि कोर्ट्स में जो पेंडेंसी ऑफ सूट्स है, हमें सबको पता है कि कोर्ट्स में बहुत सारे सूट्स पेंडिंग हैं आज तक जो इंडिया के कोर्ट्स हैं. सो उनको थोड़ा सा वर्कलोड में रिलीफ मिलेगा, और जो पार्टीज़ हैं उनका भी काम इजी हो जाएगा क्योंकि बहुत ही अर्जेंट रिलीफ मिलता है इससे. सो बिल में क्या चीज़ें मेंशन्ड है, इसके कुछ पॉइंट्स लिखे हैं मैंने थर्ड पॉइंट में. सो सक्सेसफुल आउटकम ऑफ अ मीडिएशन हैज़ बीन मेड एनफोर्सिबल बाय लॉ इन द फॉर्म ऑफ मीडिएशन सेटलमेंट अग्रीमेंट. तो जो यहाँ मैंने सेटलमेंट की बात करी थी ना, ये जो सेटलमेंट है दैट शैल बी नोन एज द मीडिएशन सेटलमेंट अग्रीमेंट. ठीक है,
So, as per the draft bill, the registration of the mediation settlement agreement has been provided with the legal authorities in state, district and तालुक. So, अगर आपका agreement आ गया है, आपका mediation settlement agreement आ गया है, तो आपको 90 days के अंदर that agreement you have to get approved by the legal authorities in the state, district and तालुक. ठीक है, आपको basically register करवाना पड़ेगा वो agreement. तो इससे क्या होगा कि ऑथेंटिकेटेड रिकॉर्ड्स होंगे. अब जैसे कोर्ट्स के रिकॉर्ड होते हैं, कोर्ट्स अगर कोई जजमेंट दे देती है तो उसका रिकॉर्ड होता है, बहुत सारा फाइल्स होती हैं, और ऑनलाइन भी आपको एससीसी ऑनलाइन, मनुपात्रा, इन सब पे रिकॉर्ड्स मिल जाएगा. सो इससे क्या होगा कि अगर आप रजिस्टर करवा दोगे अपना जो मीडिएशन सेटलमेंट एग्रीमेंट है, सो देयर शैल बी अ मेंटेनेंस ऑफ ऑथेंटिकेटेड रिकॉर्ड्स ऑफ द सेटलमेंट. ठीक है, इससे बहुत हेल्प मिलेगी. और लास्ट पॉइंट वुड बी द बिल ऑल्सो प्रोवाइड्स क्रिएटिंग अ मीडिएशन काउंसिल ऑफ इंडिया. ठीक है, ऐसा कभी नहीं हुआ है. देर वॉज नेवर अ काउंसिल ऑफ इंडिया स्पेसिफिकली डीलिंग विद द टर्म मीडिएशन, विद द प्रोसेस ऑफ मीडिएशन. सो इस बिल से अ मीडिएशन काउंसिल ऑफ इंडिया शैल बी एस्टैब्लिश्ड. ठीक है, सो दिस वॉज ऑल अबाउट द ड्राफ्ट मीडिएशन बिल. नाउ लेट्स मूव ऑन टू द लास्ट टॉपिक ऑफ द क्लास. So guys, our last topic of the class would be about the new district which has been formed recently in Meghalaya, and basically what's the law revolving around forming a new district for any particular state for that matter. Okay, so Meghalaya cabinet has basically approved a proposal to give Mairang civil subdivision a status of a full-fledged district. ठीक है, it shall be termed as the Eastern West Khasi Hills District. ठीक है, तो इस नए डिस्ट्रिक्ट का नाम क्या होगा? ईस्टर्न वेस्ट खासी हिल्स डिस्ट्रिक्ट. ये ज़रा याद रख लेना, ये इंपॉर्टेंट है, करंट अफेयर्स में आ सकता है कि नए डिस्ट्रिक्ट का नाम क्या है. सो इस पर्टिकुलर मूव से होगा क्या कि इट शैल हेल्प इन इंश्योरिंग दैट एडमिनिस्ट्रेशन विल रिमेन क्लोजर टू द पीपल. बिकॉज ऑब्वियसली अगर एक बड़ा डिस्ट्रिक्ट है, उसको अगर आप दो छोटे छोटे डिस्ट्रिक्ट्स में बांट देंगे, सो इट शैल बी ईजियर फॉर द एडमिनिस्ट्रेशन टू रन द थिंग्स. ठीक है, सो अब बात करते हैं कि बेसिकली व्हाट्स द लॉ बिहाइंड फॉर्मिंग अ न्यू डिस्ट्रिक्ट. सो स्टेट गवर्नमेंट के पास पावर होती है, एनी स्टेट फॉर दैट मैटर, स्टेट गवर्नमेंट के पास पावर होती है टू क्रिएट न्यू डिस्ट्रिक्ट, एंड दिस पर्टिकुलर पावर द स्टेट गवर्नमेंट गेट्स फ्रॉम इट्स पर्टिकुलर लैंड रेवेन्यू कोड. ठीक है, हर स्टेट का अपना लैंड रेवेन्यू कोड होता है. एमपी का अपना लैंड रेवेन्यू कोड है, गुजरात का अपना लैंड रेवेन्यू कोड होगा. सो इससे दो चीज़ें हो सकती हैं कि अगर आपको एक पर्टिकुलर स्टेट को एक डिस्ट्रिक्ट बनाना है नया, तो या तो आप एग्जीक्यूटिव ऑर्डर निकाल दीजिए, विच इज़ बेसिकली, या आप अगर अपने गज़ेट, ऑफिशियल गज़ेट जो होता है स्टेट का, उसमें डाल दीजिए कि एक नोटिफिकेशन कि देयर शैल बी अ न्यू डिस्ट्रिक्ट एंड इट शैल बी टर्म्ड एज दिस दिस दिस. सो दैट पर्टिकुलर वे इज़ कॉल्ड एज पासिंग एन एग्जीक्यूटिव ऑर्डर. और दूसरा वे है कि आप एक स्टेट असेंबली में प्रॉपर एक लॉ लाइए, और उस लॉ को फिर मेजोरिटी आएगी, तो फिर देयर शैल बी अ न्यू डिस्ट्रिक्ट इन दैट पर्टिकुलर स्टेट. ठीक है, तो ये दो प्रोसेस होते हैं, या तो आप एग्जीक्यूटिव ऑर्डर निकाल दीजिए, या तो आप प्रॉपर प्रोसीजर फॉलो करिए, जो कि होता है कि स्टेट असेंबली में पहले बिल आएगा, फिर वो लॉ बनेगा. तो ये पर्टिकुलर, मतलब दो पर्टिकुलर प्रोसेस हैं न्यू डिस्ट्रिक्ट बनने के. और ऑब्वियसली स्टेट्स का भी ये कहना होता है कि जो स्मॉलर डिस्ट्रिक्ट होते हैं, दे लीड टू बेटर एडमिनिस्ट्रेशन एंड गवर्नेंस. ऑब्वियसली जो मैंने ऊपर बताया कि अगर दो डिस्ट्रिक्ट होंगे, छोटे छोटे साइज के ही होंगे, तो उसमें गवर्नमेंट अच्छे से रन कर पाएगी, एडमिनिस्ट्रेशन अच्छे से रन कर पाएगी, विच इज़ क्वाइट ऑब्वियस. ठीक है, सो इस पर्टिकुलर टॉपिक का मेरे डालने का मोटिव ये था कि आपको ये पता चले, अगर आपको पता है तो फिर तो बहुत अच्छी बात है, कि बेसिकली न्यू डिस्ट्रिक्ट का लॉ क्या होता है एक पर्टिकुलर स्टेट में अगर न्यू डिस्ट्रिक्ट लाना है तो. और करंट अफेयर्स के पर्सपेक्टिव से ये इंपॉर्टेंट है कि दिस पर्टिकुलर न्यू डिस्ट्रिक्ट इन मेघालय शैल बी टर्म्ड एज द ईस्टर्न वेस्ट खासी हिल्स डिस्ट्रिक्ट. ठीक है, सो यही 5 टॉपिक्स थे. अब यही क्लास को यहीं एंड करते हैं. So guys, that was it. So basically, as I said earlier, that it was a two-part series, and this was just the first part. I'll try and bring the second part as soon as possible for you guys. Also, if you like the video, so I would request you to subscribe to the channel, and like all the videos that I'll keep on posting on the channel. Also, if you guys haven't joined the Telegram channel that I have created yet, so basically the link is provided here and in the channel description as well. So I would request that you subscribe to the Telegram channel as well, as I keep on posting the updates regarding the videos and current affairs series in that particular channel. Also, if you have any doubts with regards to this particular class, then you can mention the particular doubt in the comment section as well, and I'll try and answer each and every doubt. Okay,
So that was it, and thank you for your time, and I'll see you in the next class. Bye bye.